वो अपनी शोर मचाता है ना, वो अपनी शोर मचाता है। बहुत नहीं निकले यार। कैसे सुन रहा है ना, सच्ची वही तो हो। Let us go inside. All right. Let's talk. Hey everyone, welcome back to another episode. I'm here with Mr.Sumanto Ray. He's a voice actor, he's a music composer, and he also sings music, and he actually does a lot of things in the Bollywood industry. Basically, I'm a jack of all. Yes, that's pretty much it sums up what he does. But I want to dive into voice acting. How does this differ from music and singing ka practice? Like, is there a difference in how you learn it? Yeah, bilkul. These two are two different form of art, two different form of performance art. Singing needs a lot of sense of scale, pitch, rhythm, whereas voice acting also needs pitch and all those kind of stuff, but those are different. Those are not based on like voice में जब हम pitching की बात करते हैं या तो voice में pitching notations पे नहीं होता, emotions पे होता है, okay? लेकिन म्यूजिक पे जब हम सिंगिंग की बात करते हैं तो उसमें जो पिचिंग या स्केल या ये जो सेट होता है वो नोटेशंस पे होता है. Okay. तो वो these are very two different kind of forms, but सिंगिंग की प्रैक्टिस अगर आप में if you are a singer and if you've practiced trained for singing, it helps you in voice acting. Okay. It is not necessary that every singer can act. Similarly, it is not necessary that every actor. म्यूजिक में थोड़ा रिदम है. म्यूजिक में रिदम है, म्यूजिक में नोट्स पे आपको गाना पड़ता है. म्यूजिक हैज अ लॉट ऑफ ग्रामर. But voice acting, you have to sound like villains, like a different type of characters, and maybe a little like a small character, like a Smurf or something, where you have to act like a Godzilla or something, you know. वो आवाज बनाने के लिए कितनी ट्रेनिंग लगती है, मतलब how long does it take to get to that point really? ट्रेनिंग तो आपको एक लिमिटेड मिलेगी, लेकिन प्रैक्टिस इज व्हाट brings the perfection in it. So वॉइस, हर वॉइस की एक रेंज होती है, ठीक है. एवरी वॉइस कैन नॉट डू एवरीथिंग. यू कांट एक्सपेक्ट कि एक एक्टर आएगा वो आपका एकदम हाई पिच वॉइस पे कर लेगा और वो एकदम लो पिच वॉइस पे कर लेगा और मिडिल पाथ पे ले लेगा. Okay. सम एक्टर्स आर ब्रिलियंट, जिन्होंने अब प्रैक्टिस कर करके अपनी रेंज इतनी कर ली है कि दे कैन गो completely very low like this, and they can go like this also without shouting. Okay, and they can normally talk, but it is not you can't expect this from every actor. Every voice actor has a range, and some people who have that limited range also, but they have mastered their voice into that range, so they do brilliantly. Is that like specialization? Ki I specialize in deeper sounds, but I can't do higher pitch sounds. So that is what you have to know your voice. You have to know your range. So once you know your range, you know that okay, I am good with deeper voice, low pitch voices. So I practice it more and become a master of that. If you already have a deep voice, it's easier to. Yeah. Okay. Perfect. You have speaking of voice acting, you have a podcast called Kahaniyon Ki Potri. Yes. What is it about and how did it start? It's a collaboration with Hungama, if I'm not wrong. Yeah, it is on Hungama app, and we were just having a chat, and Hungama guys asked me to do. I've directed a lot of audio dramas, and I've acted in some of them also. But they suggested me, they actually pushed me that why don't you do a storytelling podcast? Okay. I was
first very skeptical about it क्योंकि story telling में बहुत सारे ऐसे podcast हैं जो single voice narration में एंड है. कंसर्न भी रहता था कि अभी बस ऑडियो है, मतलब वीडियो में कैसे हम नहीं, I have a lot of confidence in audio. ओके I have a lot of belief in this medium. कि ऑडियो हम अक्सर हल्के में लेते हैं, बट ऑडियो हैज़ अ लॉट ऑफ कैपेबिलिटी. आई कॉल इट थिएटर ऑफ माइंड. ओके If you produce a good audio content, you can actually close your eyes and visualize everything. Everything. So it has that power of taking you to places only with one senses, that is listening. it's more versatile because for every person it's a different story. Exactly. कोई मतलब डिस्क्रिप्शन कोई बोलेगा कि एक फैट मैन है, नाउ योर डेफिनेशन ऑफ फैट, योर डेफिनेशन ऑफ हाउ टॉल शॉर्ट ही इज, ये सब अपने माइंड में अलग अलग कहानी बनाएंगे, एंड व्हेन यू हैव टू एक्सप्लेन इट टू समवन इट विल कम ऑफ एज डिफरेंट. विजुअल बहुत आसान है ना कि आपने एक फैट मैन दिखा दिया और आपको दिख गया वो फैट. और लेकिन ऑडियो में बहुत मुश्किल है, लेकिन आप कन्वे कर सकते हो विद योर वॉइस, विद you योर have that knack to define the characters and everything properly. Okay, and I suppose is it just you or बहुत सारे लोग ये सेम मतलब अलग अलग कैरेक्टर्स की करते हैं, you make the sound of different characters? नहीं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं जो can bring out different characters. So you can, this is all observation, कि आप ऑब्जर्व करो जब किसी कैरेक्टर को, अगर आपको कोई कैरेक्टर दिया गया है एंड यू थिंक कि हाँ ये कैरेक्टर थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, तो देन यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग पीपल कि यार, या यू स्टार्ट रिमेम्बरिंग कि इस तरह का कैरेक्टर कौन है मेरे जान पहचान में. So you start meeting them, talking to them, and start, kind of, I won't say imitating them, but kind of taking those points कि अच्छा ठीक है, अगर हम ऐसा करें तो इस तरह का कैरेक्टर डेवलप. If you have a friend that sounds like the character you want to portray, that is what do actors do? method acting. So I won't call it a method acting. Method acting is a very different. But like you observe how it is. Every actor, a good actor, चाहे वो वॉइस में हो चाहे विजुअल्स में हो, वो अपना कोई भी कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं से पकड़ता है. ठीक है, वो कहीं ना कहीं से इंस्पायर होता है. इट कैन बी कॉमन पीपल. आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज समबडी एल्सेस परफॉर्मेंस, बट कहीं ना कहीं उसके जहन में होता है कि अच्छा ये कैरेक्टर अगर हम उसकी तरह करें तो शायद ये अच्छा निकल. Actors taking inspiration from other actors. Not other, that's what I'm saying. It's not necessarily another actor. It can be just a It person. can be a person, a neighbor. Can pick up a character from a neighbor. Okay. So suppose I'm a Bengali, brought up in UP, Okay. staying in Bombay for last 23 years. So I have seen different cultures, okay? But I've never been to South. Like, I've never lived in South. I've been to South, but I've never lived in South of India. Yeah. But today, if I get a character which is a South Indian character, and specifically, say from one particular state of South. Yeah. So suppose I've given a character which is a Malayali character. Okay. So I will just not jump into it and just not, make a caricature of Malayali person. I will try to find out मेरे सर्कल में कोई मलयाली है जिसमें वो एक्सेंट आता है, जो नेचुरली आता है. तो I will start, observing that person. Okay. And कि वो कहाँ पे क्या वर्ड यूज करता है या कहाँ पे कौन सा वर्ड किस तरह से यूज करता है. And that is something which I will bring into my performance so that it sounds more authentic than a caricature. But there are, you can sound like a different person, you can sound a different age, you can sound like a different animal altogether if you're really good at it. Of course. इसमें से सबसे difficult कौन सा है? Like if it's easy enough to say, like, what is the most difficult type of voice acting? See, every performance is a difficult performance. None of the performance, I would say, even if you do a performance in your own voice,
But the thing is how much work you are putting into it, how much effort you are putting into it. Okay. ठीक है, वो जितना ज़्यादा आप एफर्ट करोगे, वो एफर्ट शुरू में डिफिकल्टी लगती है, लेकिन उतना आसानी से आप परफॉर्म कर सकते हो क्योंकि आपने उस पर काम किया, उस कैरेक्टर पे काम किया. Okay. So, like when I did Ramayan, I played the character of Ram. Yeah. Okay? He's soothing, very calm down character. But when I made Mahabharat, I played the character of Duryodhana, which is entirely different. Yeah. So, वो पूरा ही कैरेक्टर डिफरेंट था. Okay. So, फिर आप वो कैरेक्टराइज करते हो कि ठीक है ये कैरेक्टराइजेशन है उस कैरेक्टर का. So you can do it. The only thing is that you have to work. You just can't ठीक है चलो आज करते हैं, वो नहीं होता. मतलब वॉइस को लूजन अप करना है. वॉइस को आपको ट्रीट करना पड़ता है उस तरह से कि ठीक है ये कैरेक्टर होगा तो इस तरह का वॉइस सूट करेगा, ये कैरेक्टर होगा. समटाइम्स यू डोंट चेंज योर वॉइस, समटाइम्स यू चेंज योर स्टाइल, यू pick up the characterization of the character. So you don't pick up a different voice. Sometimes you will just pick up a different style of delivery. Can you give an example? So, say, okay, I gave you Ram and Duryodhana, okay? So, if Ram is saying ki, say, प्रभु मुझे ऐसा वरदान दे जिससे कि मैं अपनी प्रजा की सेवा कर सकूं. It's a simple thing. Same voice. I have not changed my voice. It's this thing. But if I am playing Duryodhana, so the characterization of Duryodhana is that he, even if he's praying for his own benefit. That is, his character is very selfish character. Okay. So now this is the demand of the character. Yeah. So if I say the same dialogue, but as Duryodhan, so my greed or my the selfish motive should come out, and then I will say, प्रभु मुझे ऐसा वरदान दे जिससे कि मैं अपनी प्रजा का ख्याल रख सकूं, अपनी प्रजा की सेवा कर सकूं. There's a bit of slyness in it because he doesn't actually want to do it. Yeah. He's just behaving like a good guy. He's not a good guy. So this is a small example. Yeah, audience को ऐसा पता चलता है कि he's not actually trying to be nice. Audience को पता चलना चाहिए कि अच्छा ये है, क्योंकि वो विजुअली एक्सप्रेशन नहीं देख पा रहा है. Yeah. तो उसको कानों में ये सुनाई देना चाहिए. It's ऑडियो सिनेमा, उसको कानों में सुनाई देना चाहिए कि भाई ये डिफरेंस है, इस कैरेक्टर में डिफरेंस है. तो वॉइस एक्टिंग में जो डायलॉग्स डिलीवर कर रहे हैं अपोज टू अ मूवी, डू यू हैव टू ओवर एग्जैजरेट वो वॉइस थोड़ा सा इन ऑर्डर टू गिव देम अ बेटर विजुअल वर्ड्स? थोड़ा सा आपको करना पड़ता है क्योंकि वही है, आपके पास विजुअल्स नहीं है तो आपको थोड़ा सा एग्जैजरेट करना पड़ता है अपने परफॉर्मेंस को, अदरवाइज वो क्लियरली पहुंचता नहीं है. विजुअल में क्या होता है ना कि विजुअल में हम आँखों से भी कई चीज़ें कर सकते हैं, डायलॉग की ज़रूरत नहीं पड़ती. ओके. या ठीक है, तो यू कैन जस्ट लुक अप बैकग्राउंड में अगर कोई जस्ट लुक अप समथिंग एंड थिंक. से अगर आपको किसी को थ्रेट करना है, इफ यू आर सपोज if you are a powerful man and if you just threat, you just look at somebody and that's it. You don't have to say anything. But in audio you have to spell it out. तो आपको बोलना पड़ेगा. So silent moments नहीं हो सकते मतलब वॉइस पॉडकास्ट में, मतलब स्टोरी पॉडकास्ट में साइलेंट मोमेंट्स हम बना नहीं सकते. वो ऑफ एयर लगता है. हाँ या सो अगर ज़्यादा साइलेंट हो गया, ज़्यादा पॉज हो गया तो ऐसा लगता है कि तो अगर एक मतलब शो खत्म हो गया. व्हाट इज द क्लोजेस्ट टू एन इंटेंस क्वाइट मोमेंट की सन्नाटा हो गया या कोई मिल रहा नहीं है या ऐसा? सी ड्रामा में पॉसिबिलिटीज है क्योंकि ड्रामा में आपका बैकग्राउंड स्कोर होता है, SFX हो. ओके. सो वहाँ आप खेल सकते हो कि डायलॉग नहीं भी है, बट अगर आपका बैकग्राउंड स्कोर ऐसा है विच इज क्रिएटिंग द होल एनवायरनमेंट, लाइक द एवेंजर्स, मार्वल स्टफ लाइक दैट, इज ऑल सम सॉर्ट ऑफ म्यूजिक, सम सॉर्ट ऑफ SFX. अगर
if I want to visually show, like I did in a lot of my plays, I'll give you another example from Ramayana. So there was a scene between Ravan and Vedvati, where Ravan wanted to forcefully marry Vedvati. Yeah. And so this thing was, I wanted Ravan to really be scary. Yeah. Like, so my Ravan didn't used to laugh like, oh, ha, 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 ha. That was quite caricaturish. So what I did is I told Nasir Saab played Ravan in my Ramayana. So I told Nasir Saab, ये वेदवती खड़ी है, ठीक है, और डायलॉग है कि तुम उस विष्णु को छोड़कर वो तुम मुझ जैसे शक्तिशाली राजा को छोड़कर उस विष्णु में से विवाह करना चाहती हो, मैं उससे कई ज़्यादा शक्तिशाली हूँ. बट आई डिडंट वांट हिम टू शाउट. सो व्हाट आई सेड कि विजुअली आप सोचिए ये वेदवती खड़ी है और आप उसके राइट से ये डायलॉग बोलते हुए उसके पीछे से लेफ्ट आ रहे हैं, ठीक है, और उसके कान के सामने जाके एकदम पास जाके बोलेंगे कि मैं उससे भी ज्यादा. मेरा ये मानना है जिसके पास शक्ति होती है उसको चिल्लाने की जरूरत नहीं होती. वो अगर धीरे भी बोलेगा वो ज्यादा इम्पैक्टफुल लगता है. सो ऑडियो जब मैं डिजाइन कर रहा तो आई डिजाइंड इट दैट वे कि इट व्हेन यू पुटिंग योर हेडफोन्स you could hear that कि ये बंदा यहाँ से चल के टक 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 फुटस्टेप्स के साथ चल के यहाँ तक आया. इक्वलाइजर के साथ कुछ खेल आपने वो डिजाइनिंग साउंड डिजाइनिंग तो आपने यहाँ आके उसको बोला कि ऑडियंस उस चीज़ को फील कर रही है जब वो हेडफोन चला के, तो जैसे ओ अच्छा ये they can feel like the chills down their spine and that makes it more scary, that more relatable. yeah. You know, so that's how you play. So whenever there is a silence, like there are no dialogue, so that's when we play with the sound, with the SFX, with the music to make it. इसमें से कितना contribution during production और फिर post production, how much can you alter an actual episode that you recorded in post production? मतलब? See, one thing I always say कि if you're doing a drama, if you're doing a radio drama, an audio play or a drama podcast, what is the first thing other than the script? Of course, your script has to be the backbone of the thing. Obviously. But if your casting is good, and it is correct casting, you've won half the battle. Okay. So if your casting is good, actors perform well, so your 60-65% work is done. वॉइस एक्टिंग करते हुए फेशियल एक्सप्रेशंस आई हैव ऑलवेज सीन, मतलब कोई एक्टर अपने मूवी के लिए डब कर रहा है तो उनके फेशियल एक्सप्रेशंस भी व्हाट दे आर सेइंग इट मैटर्स इवन दो देयर इज नॉट अ कैमरा ऑन देम. सो फेशियल एक्सप्रेस करना हेल्प करता है. बिल्कुल हेल्प बिना फेशियल एक्सप्रेशंस के किया तो वुड इट साउंड डिफरेंट या डज इट नेचुरली? इट इज नेचुरल. आई डोंट थिंक कोई भी एक्टर ऐसा है जो बिना फेशियल एक्सप्रेशंस के इमोशंस डिलीवर करता है. वो ऑटोमेटिकली आता है. आपको फिजिकल फेशियल हर तरह के हेल्प. सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि वो जो चीज है ना, वो एक 60-65% आपका काम हो गया. उसके बाद बाकी का पूरी जिम्मेदारी जो है वो आपका पोस्ट प्रोडक्शन में होता है. तो आप वॉइसेस को कैसे ट्रीट कर रहे हैं. सो व्हेन आई एम सेइंग वॉइसेस को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, देन आई एम सेइंग कि अगर एक डायलॉग बोलता हुआ आदमी रूम से निकलता है और कॉरिडोर में चलता है, उसके बाद लिफ्ट में घुसता है, ठीक है, नाउ विजुअली आई हैव थॉट ऑफ दिस, ठीक है, नाउ इट हैज टू बी ट्रांसफर्ड इनटू द ऑडियो. सो फिर मेरा जो है रूम रिवर्ब एक अलग होगा, फिर डायलॉग जैसे ही रूम से कॉरिडोर में आएगा, कॉरिडोर का एक अलग रिवर्ब आता है, तो वो रिवर्ब अलग जाएगा. सेम डायलॉग चल रहा है. उसके बाद जब लिफ्ट खुलेगा, चंग करके खुलेगा, लिफ्ट के अंदर गया, लिफ्ट बंद हुआ, तो वो रिवर्ब सारे कट होके एकदम फ्लैट वॉइस आएगा. तो वो जब तक मैं खेलूंगा नहीं तो लोग विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे कि ये मूवमेंट हो रहा है. वो सब पोस्ट प्रोडक्शन में होता है. डू यू हैव लाइक पोस्ट प्रोडक्शन, तो वो सारा इट इज ऑल डन इन पोस्ट प्रोडक्शन. फिर हम उसको पोस्ट प्रोडक्शन में उसको
करते हैं कि ठीक है मोशन ऐसे आएगा, या अगर कोई बात करता करता, मान लो यही डायलॉग बात करता करता कोई लिफ्ट खुली और वो रोड पे आ गया, तो द होल, हाँ उसमें परफॉर्मेंस भी होती है, क्योंकि जब हम किसी एक्टर को समझाते हैं कि अच्छा यहाँ पे ना आप अपने घर से दरवाज़ा खोल के बाहर सड़क पे आ गए, तो उसका भी जो डायलॉग डिलीवरी है इट चेंजेस, क्योंकि अगर सड़क है तो ट्रैफिक है, शोर है, देयर इज लॉट ऑफ नॉइज आउटसाइड, तो अगर वो डायलॉग बोलता हुआ आ रहा है, सुनो मेरा एक काम करना कि जब मैं ऑफिस पहुंचूं तो उसके ठीक 2 घंटे बाद मुझे फ़ोन करना, ओके नाउ ही इज कम आउट, तो वो तो 2 घंटे बाद मुझे, ही इज जस्ट मेड हिज वॉइस लिटिल लाउडर, क्योंकि उसको पता है कि मुझे बहुत सारा नॉइज है। ओके, तो वो जो ट्रांजिशन उसने हमने परफॉर्मेंस के दौरान करवाया, दैट हेल्प्स अस टू प्रोड्यूस इट व्हाइल वी आर डिजाइनिंग द साउंड। तो वो, बट दीज थिंग्स हैव टू बी वेरी क्लियर इन द डायरेक्टर्स माइंड, क्यों करवाना क्या चाहता है, करेक्ट। और जब तक डायरेक्टर उसको विजुलाइज नहीं करता तब तक तो वो एक्टर को बताता नहीं है, तब तक एक्टर को तो नहीं that's what I think you as a director that does आई डू, एंड दैट्स व्हाट basically figure out how to make everything seem authentic. and also seem authentic and to break the monotony. बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि अगर आप सिमिलर काइंड ऑफ साउंड सुनते आ रहे हैं तो एक इट बिकम्स वेरी मोनोटोनस पता नहीं चलता what's actually हैपनिंग। You can't जब visuals. तो आपको विजुअल दिखाना है तो आपको विजुअल सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपने आपके दिमाग में वो सीन आना चाहिए एज ए डायरेक्टर, और जब आप उस सीन को सोचोगे कि अच्छा अगर इफ आई वुड हैव शॉट दिस सीन, आई वुड हैव शॉट इट लाइक दिस, Okay. सो देन वो पर्सपेक्टिव जो है वो आप अपने साउंड डिजाइनर को देते हैं, और फिर साउंड डिजाइनर के साथ बैठ के आप उसको उस तरह से डिजाइन। अभी हम ये सब अपॉर्चुनिटीज आपको क्या लगता है कि बिकॉज ये क्वेश्चन अभी भी मेरे माइंड में है एज वी वर टॉकिंग अबाउट सो मच वर्क ऑफ ऑडियो पॉडकास्टिंग दिस दैट, हम बॉम्बे में अभी हैं राइट, या ऑब्वियसली इट्स लाइक द हब फॉर एवरीथिंग, बट क्या ये पॉसिबल है कोई अगर चेन्नई या गोवा या लेट्स से दिल्ली में है, even though Delhi is like a very well developed city, it doesn't have the same facilities in terms of Bollywood and all that as Bombay. So वहाँ बैठ के कोई ये सब चीज़ का काम करता है, यहाँ रहना ही मतलब मैंडेटरी है कि कहीं भी कर सकते, कैसे भी कर सकते? सी जहाँ तक पॉडकास्ट की बात, सो पॉडकास्ट अगेन देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पॉडकास्ट। थोड़ा हम लोग ज़्यादा बॉलीवुड में भी बोल सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज वाइज, सी नाउ बॉलीवुड डजंट डिफाइन पॉडकास्ट, ओके, बॉलीवुड इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ पॉडकास्ट, ऑफ कोर्स, ठीक है। पॉडकास्ट जब हम बात करते हैं तो पॉडकास्ट कैन बी अ सोलो वॉइस पॉडकास्ट, अ स्टोरी टेलिंग पॉडकास्ट, इट कैन बी अ इंटरव्यू काइंड ऑफ, अ चैट शो काइंड ऑफ अ फॉर्मेट पॉडकास्ट, एंड देयर कैन बी ऑडियो ड्रामास। सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पॉडकास्ट। अगर आप सोलो वॉइस पॉडकास्ट कर रहे हैं या अगर आप चैट शो पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, यू कैन बी इन टिम्बकटू एंड डू इट। ओके, आपको चाहिए क्या, ठीक है ना। तो वो, और आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि यू कैन डू अ जूम कॉल एंड रिकॉर्ड अ पॉडकास्ट। बस मैंने सुना कि मीडिया ऑडियो लाइन में अपॉर्चुनिटीज यहाँ ज़्यादा है और दूसरे सिटीज में क्या, तो यू वोंट फाइंड द पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर इंटरेस्ट। नहीं, ऐसा नहीं है, दिस इज अ रॉन्ग नोशन। हाँ, कंपैरेटिवली बॉम्बे में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट ऐसा नहीं कि दिल्ली में नहीं है, ऐसा नहीं कि चेन्नई में नहीं है, बैंगलोर में नहीं है। रीजनल लैंग्वेजेस में बहुत सारे पॉडकास्ट बनते हैं, रीजनल लैंग्वेज में बहुत सारे ऑडियो ड्रामास बनते हैं, और वो मेजॉरिटी वहीं बनते हैं, लोकल बनते हैं। ओके, वो यहाँ नहीं आते। तो वो है, ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है, इट इज देयर। हाँ, जहाँ तक बात है कमर्शियल एस्पेक्ट की, तो वहाँ पे अभी पॉडकास्ट स्ट्रगल कर रहा है। एक्चुअली मुझे लगता है पूरे इंडिया में स्ट्रगल कर रहा है। बिल्कुल, वो तो कहीं पे भी हो आप पॉडकास्ट स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि पॉडकास्टर्स जो है, मतलब हम जो है क्रिएटर्स जो है, हम क्रिएटर्स वी थिंक अबाउट क्रिएटिविटी, वी थिंक अबाउट किक एस कॉन्सेप्ट, कि यार ये कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, ये बहुत जबरदस्त काम करेगा, बट देन वी आर गिविंग इट और वी आर putting it on air for free because there is no buyer. Okay. ठीक है, podcast has not reached a space where you get funded for but creativity.
पॉडकास्ट ऐसी चीज़ है कि इट्स जस्ट ऑडियो बट स्टिल यू कैन इफ इट्स अ स्टोरी पॉडकास्ट यू कैन स्टिल, बट ये इंटरव्यू जैसे पॉडकास्ट है, राइट? आपको लगता है कि इंडियन ऑडियंस अभी तक डजंट अप्रिशिएट दैट इनफ कि अभी उनको स्टिल स्क्रीन का ड्रामा चाहिए, एक्शन चाहिए, इसके लिए ये पॉडकास्ट इंडिया में ज़्यादा चल रही नहीं है? इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हाँ, यहाँ पे ड्रामा पॉडकास्ट ज़्यादा चलता है, पीपल प्रेफर दैट, बट स्टिल आई वुड से अगर आप इफ़ यू सी द चार्ट्स, द टॉप पॉडकास्ट टॉप 10 में अगर देखो तो तब आपको टॉप 5 में आपको चैट शोज और सोलो पॉडकास्ट से मिलेंगे। ओके, मोटिवेशनल पॉडकास्ट और सम काइंड ऑफ एजुकेशनल पॉडकास्ट, लाइक फाइनेंस पे पॉडकास्ट हो गया, या मैनेजमेंट पे पॉडकास्ट हो गया, या मैटरनिटी पे मदर्स पॉडकास्ट हो गया। दैट वुड बी very popular. Yeah, they are very popular and they're among the top 10. I think relatability also plays a role. See, इस मामले में क्या होता है, it is very similar to YouTube. YouTube में कंटेंट सबसे ज्यादा कंज्यूम क्या होता है मालूम है? नॉट एंटरटेनमेंट, एजुकेशन। ओके, YouTube में क्या पॉपुलर है? कुकिंग शोज पॉपुलर हैं, ठीक है, घरेलू उपाय पॉपुलर हैं, you know how to treat normal बीमारियां with लौकी और करेला and नीम का पत्ता and all this thing, these are very popular. तो वो है ना, मतलब रिलेटेबल ज्यादा है, रिलेटेबल है और there is something to learn, ठीक है, इट्स एप्लीकेबल। हमको लगता है कि अच्छा गाने जो हैं या फिल्म प्रोमोज जो हैं उनको मिलियंस ऑफ व्यूज मिलते हैं, बट दोज आर पुश्ड करके, मतलब कैन यू रियली बाय योरसेल्फ इनटू फेम? टू सम एक्सटेंट यू कैन, बट मुझे लगता है वो फेक फॉलोअर्स का खेल है ना, मतलब इंसान कंसेंट के बिना नहीं देखेगा कोई मूवी। वो तो है, एग्जैक्टली। सो वो टू सम एक्सटेंट इट वर्क्स टू शो नंबर्स, बट जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है वो ऑर्गेनिक ग्रोथ है, उसकी अपनी वैल्यू है, एंड पीपल, एंड व्हेन इट कम्स टू कमर्शियलाइज एनीथिंग, सबको ये देखना है कि आपका ऑर्गेनिक ग्रोथ कितना है। नोबडी केयर्स कि आपके लोग ऐसे बैठ के देखते हैं एनालिटिक्स कि ये चैनल वो सच में, लाइक द नॉर्मल ऑडियंस, नॉर्मल ऑडियंस नहीं ना, आपको एडवर्टाइजर चाहिए ना, तो आपको अगर एडवर्टाइजर चाहिए टू पुट मनी, सो इन ऑर्डर टू ग्रो फॉरवर्ड you do have to have a authentic growth in the start. Of course, very much. Wow. अगर there are tools जिससे आप पता लगा सकते हैं कि अच्छा ये चैनल में या ये इंस्टाग्राम हैंडल का ओरिजिनल ऑर्गेनिक ग्रोथ क्या है, ऑर्गेनिक नंबर्स क्या है, एंड दैट्स हाउ ये जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में यही तो देखा जाता है, दे सी द ओरिजिनल आपका ऑर्गेनिक रीच क्या है। ओके, दैट्स हाउ पीपल कम एंड पुट मनी ऑन यू। एडवर्टाइजिंग चलता है बिलबोर्ड्स पे, व्हेन यू सी इट, कि यू सी अ खाने का एड बट यू जस्ट कैजुअली ड्राइविंग, you think 30 seconds later they'll just forget about it and they'll go on with their lives. So how worth it are billboards and all these advertisements that you see? Like, see, a good advertisement always, good advertisement क्या होता है? With the recall value. Okay. You are very young, but in our time, when we used to see TV ads, we still remember the jingles. We still remember the ad films today. We know whenever we hear washing powder Nirma, we know, okay, it is there since then. Or Vico turmeric, nahi cosmetic. It is something which is engraved in our minds. We remember the tune. Yeah. Like a bop. Exactly. Bajaj, हमारा Bajaj. अमूल दूध पीता है इंडिया. अमूल दूध पीता है इंडिया. Why do you remember this? They were good advertising. Very good ads. Okay. So वो impactful रहा है, इसलिए हमको वो ब्रांड नेम से याद है. और जब वो ब्रांड नेम याद, सी एडवर्टाइजमेंट किस लिए किया जाता है? आपकी विजिबिलिटी के लिए. ठीक है. एडवर्टाइजमेंट इज द गोल ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज नेवर, द एक्चुअल गोल इज नेवर कि आप किसी को कुछ बेच रहे हैं. इट्स बेसिकली व्हेन यू सी एन एड एंड यू गो टू द स्टोर, you immediately recall
that thing and say, "Yeah, ठीक है, try करके देखते हैं." ऐसे कोई factors है that determine कि how catchy an ad is and how often people No, are. there is no factor. Sometimes, Is it luck? no, it is not luck. But sometimes it can be bad luck. I'll give you an example. Okay. Okay. Long back, there was an ad. Again, I think you were not even born that time. But people from my generation would know. एक ad था. It's a restaurant का sequence है, and there's a very beautiful girl sitting like this and looking at a man, and doing some gestures, which a man, and the man is older. The girl is very young. The man is older, and the man is looking like, she's looking at me. So he really is happy, and he gets up from his table and comes around all the tables and comes to her. Taking in the age difference, that's kind of a warning sign Yeah. already. And then the moment he comes, she does this, one black coffee, please. And then she again do that. So it was an ad of a phone, which is this size, palm size phone. Ericsson was the brand. Okay, like that. This size phone. And that was their USP. The ad was a huge hit. Yeah. People, like that time there was no social media, otherwise that would have become viral. But there was a problem with that ad was so amazing, and one black coffee please, when that comes, and the expression of the man, and like he's very embarrassed and all. After that, when the product image comes and the product slate comes, people are laughing so loudly that they miss that product, this information. So when a survey was done, everybody remembered that ad. Nobody remembered the product. No one bought the product either. In that time, phone was anyways very, very new. Mobile phone was new, and it was it was only for people who were rich. Okay. So that doesn't matter. The thing is that people didn't remember the product. They loved the advertisement, but that was a bad luck. So business-wise, that was a bad decision. I wouldn't say it was a bad decision. The thing is that maybe strategically they could have brought, but the whole fun of the ad was that, okay, last में जाके पता लगता है कि वो phone पे थी. Okay. That was the USP of the ad. That was the USP of the product, which came out very well. But what happened कि उसके वो point इतना comical था कि people enjoyed it so much कि उसके बाद जब slate आया Ericsson phone, I think they strayed too much away from the topic, and now it's become kind of irrelevant to the phone. It was bang on. The message was bang on. मैं वही तो कह रहा हूँ, ये इसको कहते हैं bad luck. कि वो होता ना का reaction है. ये public का reaction. You can't control that. You can't control that. So sometimes you make a fantastic product and it doesn't work. Even I didn't see this coming, and I don't think the people who made the ad even saw that coming. Yeah, even Sholay was not a hit. It was a flop when it came. Wow. First. तो हिट कैसे हुआ? बाद में हिट हुआ. अचानक से. हाँ, वर्ड एंड माउथ से हिट हुआ, होना शुरू हुआ कि अरे यार ये तो कुछ, और आज उसको इंस्टीट्यूट बोलते हैं हम लोग. तो ये कभी होता है, लक होता है कि शोले के साथ कोई मूवी का कंटेंट का प्रॉब्लम नहीं था. It was just that it had not reached enough people. No, it reached a lot of people. The thing was that it was a different kind of movie. That time, it was a very, very, the style of making was very, very coming out of the time. Okay. So it was very differently made. The background music was very different. It was not very tan जो पहले चलता था. हाँ. Very nicely done. So वो बहुत अलग था. It was better quality. That time it was a new age cinema. Was it like a transition from the old cinema to the? Yes, yeah. That is why it is one of the cult movies. Okay. It's like when you must watch. It's like when Dil Chahta Hai came. Okay. Again, that changed the cinema. Hmm. The
changed the Indian cinema because content का style different, making different थी, the storytelling जिसे हम कहते हैं वो different था. This is all storytelling. Na? The storytelling was different. And that completely changed the style of filmmaking in India. Okay. That is why that also became a cult movie. So it is, when you change something, which is when you create a new style and you bring in a new style, and then you start getting followed, that's when you make a difference. Okay. And that's what storytelling is all about. That's intense, and I was engaged throughout the entire conversation and actually understood it somehow, because I was thinking that would be much more complex than that. स्टोरी से थोड़ा लेफ्ट में जा या राइट में जाके बोलते हैं कि आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैंने थोड़ा स्टॉक किया, क्योंकि मैं अपने गेस्ट का रिसर्च ऐसे ही करता हूँ क्योंकि उनके पर्सनल लेवल तक पता चलता है कि व्हाट दे डू, व्हाट दे लाइक, इंस्टाग्राम अकाउंट से देयर पर्सनैलिटी, हु दे आर, व्हाट दे डू. तो उसमें देखा कि एक रील में आपने बात की थी फ्रेंडशिप के बारे में. And and in that you had said, आजकल you have so many online friends, but real friends are lacking. ऐसा क्यों? मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया. It was just an experiment. Okay. So, I recently went through a small surgery. Yeah. So I dropped that thing just before that, few days before that. Surgery. Ki I said, okay, yeah, we have a lot of friends. Like if I put a post, a lot of people are going to like it, comment on it. Yeah. I just want to know कि यहाँ कोई मेरा 4 a.m. friend है कि नहीं. A fantastic response. There were a lot of people, friends. There were people who were just followers whom I've never met, never spoken to. They said, sir, आप बोलो, जब चाहे तब आ जाएंगे, this and that. I was overwhelmed with the response. Okay. But somewhere I knew the truth. So my next post, when I was going into the surgery, I made a post of that also. कि भगवान मुझे सर में पत्थर मत देना. I have this thing of taking everything lightly. That makes it easier to understand. Surgeries, छोटा हो, बड़ा हो, it is never a good thing. But then I made a video where I said कि I had a kidney stone. So I said कि मैं हमेशा कहा करता था कि भगवान किडनी में स्टोन दे दे लेकिन दिमाग पे पत्थर ना पड़वाए. So and I've put it on. Yeah. A lot of people laughed. They wrote, yeah, you have a good sense of humor, this and that. But these are the same people who commented on the previous 4 a.m. friend wala thing. Huh. But out of all those people, there were only 2 or 3 people who came forward and said, do you need help? Do you need help? You need something. Can we do something? They realized that ये content में भी funny हो सकता है, लेकिन ये बंदा सर्जरी में जा रहा है, क्या इसको किसी चीज़ की ज़रूरत हो सकती है? So there were only 2 or 3 people who offered. The rest, everybody wrote, get well soon. So that's the reality. कि पहले सबने बोला हम हैं, लेकिन जब actual में ज़रूरत पड़ी, was that a part of the experiment? That was Intentionally. I wanted to do that and understand कि क्या होता है ये जो virtual life हम जी रहे हैं. हम मतलब एक हफ्ते में I think every smartphone gives you that data, that how much time you have spent in a week. Yeah, it does. On which app. So उसमें हम देखते हैं कि हम 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे हम इंस्टा पे, फेसबुक पे और अलग अलग एप्स पे दे रहे हैं. तो आर वी रियली इन्वेस्टिंग आवर टाइम इन अ स्मार्ट वे, या उससे बेटर ये होता कि हम किसी दोस्त से यार कॉफी शॉप पे मिल लेते, साथ में मूवी देख लेते, तो इन टच रहते, तो शायद वो जो फीलिंग है वो रियल होती है. It's obvious कि social media is fun. Hanging out in a coffee shop is also fun. And it's obvious कि also social media has taken over all of us and we are addicted and all that, right? Yeah. But addiction can be of a lot of things. It can even be of going out and playing, right?
Like when I was 5-6 years old, I used to go out and play a lot. Social media now, my mom had not introduced me to. After that, when I became like 11-12 years old, मेरे हाथ में phone आ गया. Instagram download किया पहली बार life में 13-14. But I'm just seeing. Then I realized कि phone पे था. मुझे नीचे खेलने के लिए बुलाएंगे तो मैं ना बोलता था because I want like no, I want to finish this movie, I want to watch this Instagram video. मुझे समझ में नहीं आया कि why is that not seeming as appealing anymore? I never saw social media as more fun, but it was always that I preferred it more for some reason. ऐसा क्यों होता है? सी एक हम जिसे हम कहते हैं ना, एक फैड कहते हैं, ट्रेंड कहते हैं कि एक समय आता है हर चीज़ का. अगेन यू वुडंट नो, हमारे ज़माने में सबसे पहले आया था ऑर्कुट. ओके, बिफोर ऑल दिस सोशल मीडिया एंड ऑल, योर पेरेंट्स वुड नो. तो ऑर्कुट was a place where you can meet like virtually chat with people. Website. It was kind of a so it was a chat. It was chat room. आज का Omegle है क्या वो? कि रैंडम लोगों से मिलना है या रैंडम लोगों से. वो Omegle जैसा हो गया, right? Omegle जैसा हो गया काइंड ऑफ. Okay. तो आप रैंडम लोगों से चैट कर रहे हैं. यू आर चैटिंग विद पीपल फ्रॉम यूएस, यूके एंड Saudi, and I don't You don't get to choose who you talk to. No, and you don't even know that the profiles are real or not. So That wasn't like a phase, like a fad. it was a fad, like how? But उसके बाद ब्लैकबेरी आया. जब ब्लैकबेरी का एक क्रेज चला, उसके बाद आईफोन आ गया. उसके बाद आईफोन आ रहा है जिसका क्रेज खत्म ही नहीं हो रहा है. नहीं हो रहा है. अभी भी नहीं खत्म हो रहा है. For some reason they are still. So तो वो एक फैड हो, एक 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 टाइम होता है जब हर चीज अभी just like people who are related with media or performing arts or this thing, they are more into Instagram, because Instagram has become it has become like a showroom. आप क्या सामान बेचते हो? अपना परफॉर्मेंस. करेक्ट. तो परफॉर्मेंस आप 2-2.5 घंटे की मूवी देखने के लिए आप किसी को इंस्पायर कैसे करोगे? कैसे? वो जो हम अभी थोड़ी देर पहले एडवर्टाइजिंग की बात करें तो दोज आर लाइक एड्स. अब एक 30 सेकंड का 60 सेकंड का एक वीडियो बनाओगे और उसको डाल दोगे. पीपल विल सी एंड दे विल that's how it started. And then it became a medium of earning money. Yeah. So now they're getting paid for this thing. Exactly. So it's a business for them. For common people, it is like, यार मुझे भी इतने million followers चाहिए. So it has become that. So it has become aspiring for common people. But the main point of the reel is not getting put across. अभी तो main point कुछ, there is no point. There is no point. Everybody has a different this thing only. Like reels भी पहले reels कहाँ था? पहले तो आप Instagram पे सिर्फ pictures post करते थे, videos नहीं करते थे. फिर TikTok आया. हाँ, अभी तो गया इंडिया से. But TikTok ने आके ये trend set किया, scrolling and putting videos. Okay. तो जब TikTok गया, it became an open door for a lot of apps, including Instagram. Instagram started reels, YouTube started shorts, Facebook पे videos जाने लग गए. तो everybody started doing a lot of TikTok alike apps came into picture. So that's how. So it has become like, ठीक है, let's. तो फिर एक्चुअली वो फैट जो बोलते हैं ना हम लोग, अभी तक एंड हुआ नहीं है. नहीं, वो होएगा आपको. ऐसी एंड इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ ये चेंज करते रह रहे हैं, कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ नया लाते रह रहे हैं. ये छोटे चेंजेस बाय द वे, बहुत मैसेज का बटन यहाँ से नीचे या लाइक का बटन यहाँ से ऊपर, और कुछ ना कुछ एंड इट्स नोटिसेबल, और कुछ ना नया फीचर लेके आ जाए. यूजलेस फीचर, सम न्यू फिल्टर मे बी. फिल्टर, एग्जैक्टली. ब्रॉडकास्ट चैनल्स होते हैं ना, वो भी अभी मेरे फोन पे तो ऑप्शन नहीं है अभी तक, बट मेनी सेलिब्रिटीज हैव गॉट द ऑप्शन टू ब्रॉडकास्ट. एंड अभी वेरिफिकेशन का जो बैज है उसका कोई मीनिंग ही बचा नहीं है. I can just buy. You can buy. So I have on my Instagram, I have about broadcast channel. This thing. So
वो भी मुझे नहीं पता था, वो आया तो आई आस्क्ड फ्यू पीपल कि ये क्या नई चीज़ है, तो दे एक्सप्लेन मी कि अच्छा ये ऐसा ऐसा है, ऑडियो ब्रॉडकास्ट है, तेरे को तो करना ही चाहिए, तू तो ऑडियो में है, ठीक है, आई ट्राई। सर ऑडियो मतलब मैसेजेस जो भी भेज रहे ये है, तो वो आई ट्राई, तो मैं अभी करता हूँ, आई लाइक एवरी मॉर्निंग आई पुट अप ऑडियो मैसेज, thought of the day kind of thing, and yeah, people like it. And speaking of reaching out to people and getting popular, एक मतलब because already podcast is not as popular as movies and everything are, right? They are pretty popular these days amongst the teenagers and the youngsters and all that, but it's not as popular. So advertisement की मतलब हाँ, as you were saying कि हम creative लोग इतने हैं कि हम लोग बातों में भूल जाते हैं, एडिटिंग में भूल जाते हैं, वो आर्ट में भूल जाते हैं कि बिजनेस क्या है, business aspect भूल जाते हैं हम लोग. So how do we, especially for podcasts, how do we put ourselves out there and increase opportunities? So कोई like how do you? See, need of the market. It's you have to see again, thinking of a podcast and thinking of AFP जिसे हम कहते हैं, which is Advertisers Funded Program. So क्या मैं कुछ चीज़ें अपने आप बन जाती है, जैसे मान लीजिए अगर कोई एक पॉडकास्ट कर रहा है ऑन मदरहुड, ठीक है, सो देयर आर लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑलरेडी विच आर देयर, ओके, सो दे मे सी द पॉपुलैरिटी ऑफ द पॉडकास्ट कि यार ये बड़ा And पहले से there are a lot of mothers who हाँ, so तो let us put some money into it so that we can reach out to those mothers, those people who are following this podcast. Yeah. तो वो एक नेचुरल फिट हो जाता है. Yeah, सही. लेकिन आप कभी कभी बना भी सकते हो. So I don't know, you make a podcast for say a brand like Ustra, so आप men's grooming के बारे में एक शो कर सकते हो, which is specifically made for men's grooming brands. Okay, and then you can pitch it. Okay, and you may get funded. So once you get funded, so with that fund, you can, out of that fund, you can create something else also, which is more creative. So that's the thinking which needs to change. But at the end of the day, as you said, you can't buy yourself into like complete popularity. No. There's no way. क्योंकि audience authentic है. Audience authentic होगी, brands को सब पता है. brands को सब पता है. उनको मालूम है कौन authentic है कौन नहीं. Understood. So आप वहाँ पे बेवकूफ नहीं बना सकते आप कुछ. आज के डेट में तो बिल्कुल नहीं ना. It's too secure. हाँ, it's very it's science. It's a data is available freely. You can easily pick up somebody's Instagram. किसी के भी पोल खोल सकते हैं आराम से. आप किसी को भी देख के आप ये उसका डेटा एनालिसिस कर सकते हो कि ठीक है इसके इतने फॉलोअर्स हैं, इतने फॉलोअर्स हैं और इतना एंगेजमेंट होता है. ओके. इसके पोस्ट पे तो देखा वही जाता है कि एंगेजमेंट कितना है. यू मे हैव 10 million फॉलोअर्स और आपका एंगेजमेंट 20,000 हो रहा है. So that's the value which you get. ऐसा देखा है कि lot of people have lot of followers but उनके पोस्ट पे ज़्यादा लाइक्स नहीं मिलते. हाँ, क्योंकि वो अब एंगेजमेंट उतना नहीं है. Because वही देखते इतने सारे लोगों को फॉलो करते हैं कि उनका स्टोरी हाँ वो it gets lost in the mess. And the constant change in algorithm of these apps, also sometimes all of a sudden you will see something is going very popular and then फिर उसके बाद एक समय के बाद वो डिप होना शुरू होता है. वो शिफ्ट कहीं और चला जाता है. तो that is something which is constant. Moving on to the last question. It's going to be a little more personal to you. What has been your most what is one project that you are the most proud of, that you remember the most and you let's say it's become your favorite at this point? It's a difficult question here. It's like asking a mother who's your favorite child. So because I have created many shows, I remember each and every show, but still if I have to pick one, I would say Ramayan, which was my first audio drama which I did. It was a brilliant experience working with actors like Nasiruddin Shah, Ratna Pathak, Javed Jafri, Om Puri, Anupam Kher, Jayati Bhatia,
Sudha Shivpuri, and and there were many more good actors, theatre actors who performed in that. And that is one, and we a lot of hard work to produce that. We created Foley's, worked on music, worked on sound. Everything was original. It was your first time? It was my first audio drama which I produced. That time there was no podcast in India. So that was released in radio. It was released on Fever FM. And then it was a 24-pack, the CD pack. That time CDs used to work. A 24 CD pack was released by Saregama. Okay. And in terms of, if you ask me, podcast, it was released on iTunes. Okay. That time. Okay, it is still there in iTunes. Yeah. And then Vodafone and Idea and Airtel. So they used to have this VAS, so these value-added services. They picked up the show and put it on their VAS. So because that time there was no podcast channel. Yeah. So these were the mediums which were used, and it became very, very popular. And it won 2 gold awards in New York Festival, which is one of the most prestigious awards in terms of audio production. What year was that? 2012. 2012. Yeah, 2012 we won 2 golds, 2 categories, one best editing and one best sound designing. Wow. And that was a very proud moment. Cool. Then we won a lot of awards in the consecutive years, but that was the first. For me also, first time working with such brilliant actors. You dream of, as a director, you dream of working with these kind of actors. Then winning awards, like majestic. It becomes like, I was not working towards winning awards. I was working towards making a good product and for the new generation. So, but eventually it got us a lot of awards, and it went like super well. Super well. I mean, I suppose that a story like Ramayana, right? Already the plot of the story and everything, putting aside the beliefs whether it was real or not, it was already an interesting enough story. I've heard it in my childhood, don't remember much, but yeah, definitely. And then adding on that, such amazing voice actors are there. First of all, that's true. See what happens because when I proposed this to my company, okay, I want to bring in the culture of audio dramas again. Again, in our time, we used to listen to All India Radio before the FM, the private radio came into business. In All India Radio, there used to be a show called Hawa Mahal. Okay, Hawa Mahal used to be radio dramas. As an actor, I have been a part of a lot of audio dramas then, but I wanted to bring in that culture again of listening to audio drama. What happened is radio, when FM started, so radio became a passive medium. Okay, passive medium in the sense you are cooking, you're listening to radios on, you're driving, radios on. Happens to be a part of your life. It just happens to be a part. It was a thing which was playing in the background. It's always there. There was no specific appointment listenership. Like, if you wanted to see KBC, it came at 9 o'clock, you would, sit in front of the television at 9 o'clock. But radio के साथ वो था ही नहीं. Radio on हो जाता था और वो चलता रहता था. I wanted to bring in that also कि यार radio should be that respect towards the medium. People should tune in at a particular time to listen to a show. You're hearing it, but you're not listening to it. Yeah, that's why I wanted to bring in this thing. So it took me 2 years to convince my company to do that. But finally, when they decided कि ठीक है करते हैं, but क्या करना है? So then we decided that we would do Ramayana, because Ramayana is something
जिससे लोग रिलेट कर पाएंगे इजिली, Yeah. क्योंकि वो सुना है, मेमोरी में कहीं ना कहीं है, Yes. And it's तो वो रिफ्रेश होगा। you've heard of it all the time. हाँ, सो ये एकदम नया नहीं होगा कि अरे ये क्या हो रहा है। सो उसके बाद वी डिड अ लॉट ऑफ ओरिजिनल्स, बट देन वी डिसाइडेड टू डू रामायण बिकॉज ऑफ दैट रीजन की थोड़ी रिलेटेबिलिटी ईजी हो जाए। Right. I mean, all this time I was listening, I was literally in a trance because, you know, you explained it in such a way. Actually, I think the topic only we talked about was like super deep. उसमें बहुत सारे layers थे that we went through, right? We went from podcast Q&A चल रहा है to how to scale up your podcast, and I think I'm going to apply that to my life also क्योंकि podcast तो मैं भी चलाता हूँ. So, कि I tell you one thing, the mantra is content is king. If you have good content, any medium, चाहे वो टेलीविजन हो, वेब सीरीज हो, मूवीज हो, पॉडकास्ट हो, if you have a good content and if you produce it well, you know, it works. It may take some time, but then I think luck also plays a little role, but at the end of the day, it's about how much work you put in. yeah, Because how much if work- they करे, will they stay for it? That's their choice. But chances Exactly. will increase if you do. the thing is कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो उसके Yeah. पीछे, या आपने इसको जस्ट एज अ हॉबी माना है कि चलो वही करते हैं, कुछ नया करते हैं, वो अगर होगा तो शायद इट मे नॉट वर्क। बट अगर आप मेहनत लगा के कोई चीज़ करते हो, उसका रिजल्ट तो मिलेगा। You'll have a strong base of audience. They won't ever leave because Yeah, they like your content. correct. They don't just watch it. So I mean, yeah. Wow, that was a crazy conversation. I really loved it. And yeah, I mean, yeah. Anything to say to your audience and my audience? Any ending notes or anything? Just love the work we all are doing. We are creators. We create for you. Yes, उसमें थोड़ी बहुत हमारी भी सेल्फिश वो रहती है कि हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन वो हम अच्छा करना चाहते हैं क्योंकि वी वांट टू डू इट फॉर यू, वी वांट टू Yeah. सर्व इट टू यू। एक शेफ खाना बना के खुद नहीं खाता है, वो खाना बना के खिलाता है लोगों को। सो हम क्रिएटर्स जो हैं वो शेफ या वो घर की वो गृहिणी समझ लीजिए, जो खूब सारा मन लगा के, खूब सारा एक्सपेरिमेंट करके कोई कंटेंट, कोई क्रिएशन बना के आप सबके सामने रखते हैं। एंड द ओनली सपोर्ट वी नीड फ्रॉम यू इज जस्ट appreciate the work we are doing, criticize the work we are doing. If you don't like something, please let us know. But आप देखें और communication two way रखें, हमको बताएं क्या अच्छा नहीं लगा. So we will improve. Exactly. We improve by your feedback only. Amazing. It was a pleasure having you on the show. Thank you very much. Wish you all the best. Thank you, sir.